Hello there, welcome back to my channel. I'm Kaur from Learn English with Kaur, and I hope you all guys are learning this language in a great way and in an interesting way. So let's get started our video without squandering our time. Today I'm going to talk about why our mind goes blank whenever we try to speak in English, or why any beginner's mind goes blank whenever he or she tries to speak in English. Well, it happens. For example, when I was beginner, when I just started learning English, so at that time it used to happen with me. So whenever I used to try to speak in English, so at that time I just feel that my mind goes blank. I don't have words in my mind, and I can't speak in front of anyone. So that is why I don't think so I could learn English. So it used to happen with me. Okay guys, that's what I want to say here. So how could we tackle this problem? It's a kind of main problem for all of the learners who are beginners in English, but they want to improve their English. They want to escalate their knowledge of English. So they can easily tackle this problem with some good sort of solutions. So what kind of solutions are there or are available here? So today, that is why I'm here. I will talk about all the solutions that you can do for improving your communication skills, for brushing up it. So number one, our question is why my mind goes blank whenever I try to speak in English. So it happens, and why it happens, guys. On a daily basis we learn a lot of words in English. Sometimes we learn 4 to 5 words on a daily basis. We don't know, but we are learning. Okay, whenever we read any kind of book in English, so at that time there would be some words which would be kind of activate in your mind, in our mind, sorry. So what I want to say here, there are a lot of words which are passive in our mind. We know about all of those words, but we are not using them. So those kind of words are passive vocabulary, okay? But on the other hand, if I would talk about the active vocabulary or active words are those kind of words which we are using in our daily life. For example, we are trying to make a sentence, and at that time we are using some words in that sentence. So which words we are using in that sentence, so those words are activated in your mind. There are two kinds of vocabulary in our mind. Firstly, passive vocabulary, and second one is active vocabulary. If we would talk about the passive vocabulary, so passive vocabulary is that kind of vocabulary which we don't use, but we read that in our books, in our educational books, okay? But on the other hand, paradoxically, if I would talk about the active vocabulary is that kind of vocabulary which we use on a daily basis whenever we try to make any kind of sentence in English, okay? Very initial thing what I want to say here, that if you really want to learn any kind of language, firstly you will have to feel hesitate for learning that language. Why you will have to feel hesitate? Because that language would be new for you, and you do not know about some words in that language. And sometimes whenever you will try to speak in front of anyone in their language, so definitely you will have to feel hesitate, because you are getting new words in your mind and you are trying to use them. But whenever you want to use them, your tongue refuses to use those words in sentences, okay? So that's a kind of hesitation, that's a kind of feeling of hesitation that you will have to feel in the first phase of learning any kind of language. Now what is the next thing? I already told you about passive and active vocabulary. So which is the passive vocabulary? You have to make that vocabulary active in your mind, okay? How could you activate that vocabulary? So if you're trying to make sentences in English, if you're trying to speak in English, so try to use that passive vocabulary in sentences, okay guys? Let me explain it in Hindi, okay? So guys,
पैसिव वोकैबलरी वही वोकैबलरी होती है जो कि हम पहले से रीड कर चुके हैं बट वी आर नॉट यूजिंग दैट वोकैबलरी। मतलब कि पैसिव वोकैबलरी वो वोकैबलरी होती है जिस वोकैबलरी वर्ड्स को जिन वोकैबलरी वर्ड्स को हम बुक्स में पढ़ चुके हैं अपनी क्लासेस में, जब हम एजुकेशन कर रहे थे या कर रहे हैं तब भी हम पढ़ते हैं। ओके, तो वोकैबलरी के वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे दिमाग में है बट वी आर नॉट एक्टिवेटिंग दैम। मतलब उन वर्ड्स को हम एक्टिवेट नहीं कर रहे, उनको हम यूज़ नहीं कर रहे अपनी डेली लाइफ में। हाँ, हम वोकैबलरी के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं व्हेनेवर वी ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। मतलब जब भी हम ट्राई करते हैं इंग्लिश में स्पीक करने के लिए, बट हम वही वर्ड्स बार बार यूज़ करते हैं जो हमें कॉमन लगते हैं, इजी लगते हैं यूज़ करने के लिए, हम उन्हीं को यूज़ करते हैं। सो वो वर्ड्स तो आपके माइंड में अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यू आर यूजिंग दोज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ इन मेकिंग सेंटेंसेस और वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश यू आर यूजिंग दोज वर्ड्स। बट जब बात आती है पैसिव वोकैबलरी की, तो पैसिव वोकैबलरी वो तरह की वोकैबलरी होती है जो वर्ड्स हमको डिफ़िकल्ट लगते हैं या जिन वर्ड्स को हम यूज़ तो करना चाहते हैं, हमारे माइंड में भी है बट हमारी टंग पर नहीं आते। ओके, जब हमें उन वर्ड्स की ज़रूरत होती है हमारी टंग रिफ्यूज़ कर देती है उनको अपने ऊपर लाने पर, मतलब उनको बोलने के लिए रिफ्यूज़ कर देती है। बट उस वोकैबलरी को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? उस वोकैबलरी को एक्टिवेट करने के लिए फॉर्मूला है कि आपको क्या करना है। पहले तो कुछ ऐसे वोकैबलरी के वर्ड्स ट्राई करो फाइंड करने के लिए जो कि आपके लिए नए हों सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, कल ही मैंने एक वोकैबलरी का वर्ड लर्न करा है कि काफ़ी टाइम पुरानी एक मेरी जीन्स थी, तो उसकी जेब में मुझे 10 रुपए का नोट मिला। ओके, तो वो एक सिचुएशन हो गई और उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? उस सिचुएशन को कहते हैं सेरेंडिपिटी। ओके, तो उस सिचुएशन से मैंने एक वोकैबलरी का वर्ड सीख लिया। तो इसी तरह से आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी वोकैबलरी के वर्ड्स सीख सकते हैं ना। वो सिचुएशन तो मेरे साथ हो गई, मेरे साथ हैपन हो गई, और इसके अलावा मैं और कौन सा वर्ड यूज़ कर सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल की वीडियो के मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि विदाउट स्क्वेंडरिंग आवर टाइम। अभी स्क्वेंडरिंग का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, मतलब मैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करती हूँ। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ सिनोनिम ऑफ सेइंग वेस्टिंग। ओके, तो इस तरीके से आप न्यू वोकैबलरी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। अपने पैसिव वोकैबलरी वर्ड्स जो कि आपके माइंड में पैसिव है उनको एक्टिवेट भी कर सकते हो बाय मेकिंग सेंटेंसेस। मतलब आपने कोई नया वोकैबलरी का वर्ड तो सीख लिया बट you are not using that word, so how it gonna be activate in your mind? No, it's not gonna activate. If you really want to learn that vocabulary words, if you really want to activate those vocabulary words, so you have to use those words in your daily life and try to make your daily routine. Try to talk about your daily routine on your daily basis. Try to talk about your daily. I have told you that why our mind goes blank whenever we try to speak in English। मतलब कि मैंने आपको बता दिया कि हमारा माइंड ब्लैंक क्यों हो जाता है जब हम इंग्लिश में बोलने का ट्राई करते हैं, जब हम जस्ट बिगनर हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अभी सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे उन वर्ड्स को एक्टिवेट कर सकते हैं अपने माइंड में। जब भी एक्चुअली मेनली ऐसा ही होता है कि जब भी हम ट्राई करते हैं इंग्लिश का बोलने के लिए किसी के सामने, ठीक है, जब हम जस्ट बिगनर हैं इंग्लिश में, तो उस टाइम पे हमारे पास साथ ऐसा होगा ही होगा कि हमारा माइंड है जो थोड़ा ब्लैंक हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, अगर हमने वर्ड्स को कभी यूज़ ही नहीं किया इंग्लिश के वर्ड्स को किसी के सामने। ओके, तो ये ना नेचुरल सी बात है कि आपका माइंड ब्लैंक फील करेगा उस टाइम पे। ओके, और ये बात स्वाभाविक भी है, मतलब नेचुरल है कि ऐसा होगा। बट आप क्या कर सकते हो वो मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया। अगर आप ये सोल्यूशन भी नहीं कर सकते, अगर आप वोकैबलरी के वर्ड्स को लर्न करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट मानते हो, अगर आपको लगता है कि वोकैबलरी के वर्ड्स मेरे माइंड में हैं बट अभी मैं और नहीं लर्न करना चाहती, तो आप इस टाइम पे क्या कर सकते हो? अगर आपके माइंड में ऑलरेडी से हैं वोकैबलरी वर्ड्स बट यू वांट टू एक्टिवेट दोज वर्ड्स, सो आप क्या कीजिए कि कोई भी सिचुएशन ले लीजिए और उस सिचुएशन को इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है, नॉट इन फ्रंट ऑफ एनीवन, जस्ट with yourself, with your own self. Okay? You can describe situations in English. For example, you have any kind of scenery. For example, that scenery is related to football ground and there are a lot of kids who are playing football and their parents are watching them. So there are a lot of objects by
using the name of which objects you could make sentences. For example, football, kids, parents, ground, and grass. So there are 5 words which we have in that scenery. By using that scenery, we could get to know about or recall those words in our mind. Okay, now we are gonna use those words in sentences. Now, how could we use those words in sentences? For example, our first word is football, so we could make one simple sentence, that is, uh, there is a one football. Number second word is children. All of the children are playing with the football. मतलब सभी बच्चे फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं. Number third, parents. So their parents are watching their children like they're playing football. So there are 3 sentences and 3 words which we have used in our sentences. Sorry. Now number 4, grass. So there is a green grass. That is a kind of natural grass for feeling good, and all of the individuals can feel connected to the nature by seeing that grass. Okay, so number 5 word number 5, sorry. So what is number 5 word? You have to comment me in the comment box, and you will have to make sentence by using this word. Okay guys, so this is a kind of challenge for all of you guys. You have to make sentence by using the word number 5. Okay, now I have told you that how could you use situations for learning English. Okay, you could explain situations in English. You could explain whatever you have seen, whatever you are looking at, on whatever you are looking at. Okay, so you could explain those sentences, explain those situations in sentences in English. Okay guys, actually right now I am fumbling and I am feeling a bit hesitate. I don't know why, but I'm feeling hesitate, and sorry for interruption. Please avoid this. But if you can't explain situations in English, मतलब आप situations को English में explain नहीं कर सकते, sorry, आपको लगता है कि ये भी आपके लिए difficult है, so you could easily record yourself in English. Try to write something in English. Try to read that aloud in sentences. Okay, try to read that thing aloud. मतलब उस चीज़ को आपको ऊंची बोलना है. Then जो भी आपके माइंड में ग्रिप कर लिया, आपके माइंड ने ग्रिप कर लिया, ग्रैब कर लिया, ठीक है, जिस चीज़ को उसने लर्न कर लिया, कोई भी वर्ड है, कोई भी सेंटेंस है आपके माइंड में रह गया, ट्राई टू रिकॉर्ड दैट थिंग इन योर मोबाइल फ़ोन. देन उसके बाद क्या करना है, अगर आपने उस चीज़ को अच्छे तरीके से बोल दिया, ट्राई टू लिसन दैट एंड ट्राई टू ग्रैब दैट वेयर आर यू मेकिंग मिस्टेक्स. Are you pronouncing any word in a wrong way, or are you making any sentence in a wrong way? Thanks for watching, friends. Please like, subscribe and share it as much as you can, because that's gonna be very helpful for me. That's gonna be a kind of big support for me, because I would get to know about that you guys are watching my video and learning something from my videos. So please like, subscribe and share my channel as much as you can. If you have really learned something from this video, so please comment me in the comment box, and please subscribe my channel, and please comment me that you have learned something. Please make any sentence as a comment and just comment below. Thank you, and follow for more.